Hello everyone, welcome to PW OPSC Wallah. This session is all about the Hindu editorial analysis. Last class रे बा last Hindu editorial analysis session में हमें discussion करिथिले कि what is the relevance एवं ए important topic मानक ऊपर हमें discussion करथिले last class रे जेमति कि female employment participation rate, reasonable accommodation and disability rights, heat stress, union budget 24-25, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, कर्नाटका बिल, ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक मानक ऊपर हमें लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले लास्ट एडिटोरियल एनालिसिस रे. सो आज केतरा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करिवि जेमति कि रिकास्टिंग केयर मॉडल फॉर मेंटल इलनेस, होमलेसनेस, रेफ्यूजी राइट्स, विजन इंडिया एट 2047, then on natural climate change, more efforts required to curb down plastic production and plastic pollution in India, key amendments to the International Health Regulation 2005, license rules for digital content creator, the issue of institutional violence and how to address this. These are the important topics which needs to be discussed today itself. So discussion करिवा पूर्वरु जो माने दो who are new learners to this series सेमानंकु कहिबि कि करंट अफेयर रा इंपोर्टेंस OCS एग्जामिनेशन में बहुत अधिक. इट मे बी प्रीलिम्स और मेंस, ये प्रीलिम्स हो बा मेंस हो यार रिलेवेंस बहुत अधिक. एंड स्पेसिफिकली इन मेंस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस यार वैल्यू जदि हमें देखिबा, दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स टू एनरिच योर आंसर. apart from this preliminary examination pay mu already discussion karichi in other sessions ki economics prelims re economics subject ru kete gudi topic directly Hindu editorial ru asichi se सब mu discussion karichi in other sessions. Now coming to the sources, current affair ko source पढ़िवा दरकार mu कहिछि most important is the Hindu, Daily Editorial and other news, then EPW, Economic and Political Weekly, Yojana, Kurukshetra, Geography and You, Down to Earth, World Focus, Science Reporter, Frontline. These are some of the important sources that you should refer if you are preparing for OCS preliminary as well as mains examination. So basically को section को हमें focus करिवा दरकार, को section को current affair में अधिक और अधिक पढ़िवा दरकार if you are preparing for OCS mains. एको बुझिया पई हेले हमें फर्स्ट जानवा दरकार व्हाट नॉट टू स्टडी. को पार्ट एक्सक्लूड कर देबे. न्यूज़ रे को टॉपिक को पढ़िबे नहीं, जेमति कि पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल रिमार्क्स, लोकल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ए रिलेटेड न्यूज़ को बेसी पढ़िबार नहीं. काहे कि ना ए टॉपिक रो हमर किछि क्वेश्चन आसुनी. ताले को टॉपिक रो क्वेश्चन आसुची, जो पोर्शन रो टॉपिक आसुची, जो पोर्शन रो क्वेश्चन आसुची, हमें सेही पार्ट को अधिक और अधिक इंपोर्टेंस देबा. जेमति कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जेमति कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट कोन वर्डिक्ट दैछथि. सिक्योरिटी इश्यूज लाइक जम्मू कश्मीर रे कोन सिक्योरिटी इश्यूज चलेछि, मिलिटेंसी इवन इफ आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, एलडब्ल्यू रिलेटेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बा नक्सल बा माओवादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कम्युनल वायलेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब हम पे इंपोर्टेंट टॉपिक. इन द सेम वे आईआर रा किछि पोर्शन मध्ये हम पे इंपोर्टेंट, जेमति कि आवर नेबरिंग कंट्रीज, because India's neighboring countries, some countries are volatile in nature and some countries they are unfriendly neighbors of India. Apart from this vulnerable section of the society, it is required for access to justice. You have a subject Indian society, we have a subject social issues and we have a subject social justice. So ये सब टॉपिक पई हमको vulnerable section मानक ऊपर पढ़िवा दरकार. बा गवर्नेंस रे मध्ये vulnerable section रे इंपोर्टेंस अधिक. सो पेपर 1 2 3 जीएस रे ये सेक्शन टा हमको हेल्प करियो. vulnerable section एटी on the basis of gender we will be talking about women, on the basis of caste, scheduled caste, other backward caste, ba on the basis of isolation, tribal population, children, LGBTQ community, ये सब ऊपर vulnerable section ने हमें पढ़िवा दरकार. ये ला ए पॉइंट को फोकस करिवे if you are preparing for current affair. So current affair को implement करिवे केमती, लास्ट टाइम मध्ये मु कहितली you should know your syllabus properly and micro syllabus analysis GS paper 1 2 3 4 as discussed in the last class. समस्त चारिटा नोट्स करिवे, 1 पई गोटे, 2 पई गोटे, 3 पई गोटे, 4 पई गोटे, रिलेवेंट पोर्शन को रिलेवेंट टॉपिक को नेकी सेठी इंक्लूड करिवे, से खाता रे इंक्लूड करिवे.
and you have to prepare accordingly. से हिसाब रे prepare करिवे and revision करिवे. ठीक अछि ताले आजि रो टॉपिक को हमें जिबा. सो टॉपिक को जीवा पूर्व आ गोटे पॉइंट जेहेतु एते गोटे सोर्स ऊपर मो डिस्कशन कली लाइक फ्रंटलाइन ईपीडब्ल्यू योजना कुरुक्षेत्र वर्ल्ड फोकस. सो एटा गोटे डिफिकल्ट टास्क एते गोटे मैगजीन को मंथली पढिबा इवन इफ हिंदू एडिटोरियल को डेली पढिबा ताकू ने कि तार एप्रोप्रिएट प्लेस रे रखिबा कि वेदर इट इज फ्रॉम जीएस 1 और 2 और 3 और 4 ताकू रिवाइज करबा तार रिलेवेंट पोर्शन को कनेक्ट करबा इफ इट इज सोशल इश्यूज आको कनेक्ट करबा विथ एनवायरमेंटल इश्यूज or economic issues or with cultural issues. It is quite difficult. यही पर्पस रे हमें ये हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास करूछे जोटी प्रत्येक इंपोर्टेंट एडिटोरियल को मु डिस्कस करिवि एंड ये क्लास अपन मान को संडे चैनल ले मिल जिवो. अपार्ट फ्रॉम दिस जो गुडा कर रेस्ट ऑफ द मैगजीन्स रहिले ता ऊपर मध्ये वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव जोथरे हमें इंपोर्टेंट मैगजीन रो किछि इंपोर्टेंट कवरेज बा इंपोर्टेंट आर्टिकल ऊपर डिस्कशन करियो. बट एज ऑफ नाउ हिंदू एडिटोरियल ऑलरेडी स्टार्ट हो जाई छी. लास्ट क्लास रे मध्ये जुलाई मासर किछि इंपोर्टेंट प्रोविजन से मु डिस्कस करथिली. आज रे डिस्कशन को हमें आसीबा. सो फर्स्ट टॉपिक अछि हम पाखरे रिलेटेड टू रिकास्टिंग केयर मॉडल्स फॉर मेंटल इलनेस एंड होमलेसनेस. हैला सो एटा को हमें बुझवा दरकार कि हमर करेस्पोंडिंग सिलेबस कोन को सेक्शन नु ये आसुची ये जीएस2 रो आसुची एवं जीएस3 रो आसुची. जीएस2 रे गोटे टॉपिक अछि हमर schemes for vulnerable section. Now homeless person they are also vulnerable or those who are suffering from mental illness they are also vulnerable in nature. That's why ये GS2 को भी correspond करूची plus GS3 को GS3 रो economic subject paper GS3 subject economics topic growth development and happiness सब topic जदि हमें देखिबा mental illness 8 सब topic रो एटा आसुची तेनु आपको पढिबा दरकार क्लियरली एटा बुझिबा दरकार mental illness कौन and how the rights are being violated. Now see mental illness ये गोटे economic issue मध्य. Let's see how to connect all those things. ये गोटे economic issue मध्य केमति ये गोटे economic issue mental illness टा. Now those who are suffering from mental illness their production is zero. Their production is zero. It means their contribution to GDP is zero. Contribution to GDP is zero. It is another economic aspect. So this is like a loss to the economy. Apart from this एटी कोन दरकार ना हेल्थ केयर फैसिलिटी से मानको प्रोवाइड करा जो. हेल्थ केयर फैसिलिटी किए दबो ना हेल्थ केयर फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अगेन दिस इज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट और दिस इज अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट और दिस इज अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. ये ला इकोनॉमिक एस्पेक्ट एटी गवर्नमेंट रो एटी कोन होची ना गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होची जहां रो इंपैक्ट पड़िबो कहां पर फिस्कल डेफिसिट ऊपर पड़िबो गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बढ़ी. देन आउ कोन हेल्थ केयर फैसिलिटी मध्ये इकोनॉमिक्स रो गोटे टॉपिक जोटी पढिबा दरकार. सोशल इश्यूज रो मध्ये ये गोटे टॉपिक काहे कि ना व्हाट आर द सोशल इश्यूज दे आर फेसिंग. सोशल जस्टिस रो ये गोटे टॉपिक बिकॉज़ देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड. व्हिच टाइप ऑफ राइट्स डिफरेंट राइट्स लाइक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ बजा हमको द राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ दैट इज वायलेटेड. सो सोशल जस्टिस एंगल मध्ये ये टॉपिक इंपोर्टेंट. सो जेतोळे हम सोशल इश्यू ऊपर पढुचे तार इकोनॉमिक इंपैक्ट कोन देखिबा दरकार एवं तार लीगल सोशियो लीगल एंगल बजा को सोशल जस्टिस पार्ट को जाउची तार इंपैक्ट कोन देखिबा दरकार. So ये ला corresponding syllabus. ये ला corresponding syllabus. Let's have a discussion on this same topic. वर्तमान से समस्त बुझी पारले कि ये टॉपिक जोटा हिंदू एडिटोरियल रे आसीतिला एटा हम जीएस रो को पार्ट को बिलोंग करूची एवं को सेक्शन को हम एटी कवर करबा दरकार. दैट इज डिस्कस्ड. नाउ कम टू द टॉपिक. वर्तमान टॉपिक को आसीबा इश्यू को आसीबा तापरे हमें डिस्कस करिया व्हाट आर द सॉल्यूशंस. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट वे फॉरवर्ड. प्रथम ये कहूची लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू mental illness and homelessness. यदि हम देखिबा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ये कहा द्वारा कंडक्ट हुए ना इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस उदचिटा ना बैंगलोर अछि. एटा 12 टा स्टेट रे इंडिया रे 12 टा स्टेट रे ये सर्वे कंडक्ट होई एवं एथुर हमको कोन मिलिला ना मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, severe mental disorders, alcohol and substance use disorder एटा हमको केते देखिबा पड़ुची ना ग्रेजुअली एटा इंक्रीज हे जाउची. स्पेशली ओवर द एज ऑफ 18 इयर्स इट इज अबाउट 10.6%. so this is about 10.6%. this is a major statistics that we have to remember and you can also incorporate all these fact and figures in your answer sheet. जेतेबेले मेन आंसर लिखुचंती ये पॉइंट को मधे इंक्लूड करि परिबे
while talking about mental illness, how many people are suffering from mental illness, which type of mental illness, and what is the source. The source is the survey here, the survey which is conducted by National Mental Health Survey, conducted by National Institute of Mental Health and Neuroscience, Bangalore. Then what are the key findings? Major finding is survey ରୁ हमको कौन मिला ना, ये first कहूची the prevalence of mental morbidity is high in urban metropolitan areas. Urban metropolitan area रे mental illness हमको अधिक देखियो मिलची as compared to rural India. So this is just a comparison between rural and urban India. Rural India रे mental ventilation is more as compared to urban. Why? ना social cohesiveness जोटा हमें urbanization जेतबेले पढुते social issues रे सेठी पढिबा social issues topic ro urbanization by Indian society ro urbanization ne ki social cohesion is maximum in rural India as compared to urban India. Urban India re focus kara jaye kaha na isolation by individualism, individualistic characteristics nijo upare sabale human being focus kare, whereas rural India re kon हुए ना, rural India रे there is a social cohesion, लोक माने मिसंती, so सेठी जानी यात्रा पर्व पर्वाणी जहाँ भी हैला समस्त भितर गोटे इमोशनल अटैचमेंट रुहे, so everything is included there. यही कारण जदि आम देखा रूरल इंडिया रे हमको मेंटल इलनेस कम देखा मिले एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया, कहीं बुझे ना, बिकॉज ऑफ आइसोलेशन रूरल एरिया रे हमको अधिक आइसोलेशन देखा मिले ना. देन इट इज रिलेटेड टू consequences of several non-communicable diseases. This is also consequences of several non-communicable diseases. When a person is suffering, what is health is wealth. Health is wealth. Now, when a person is suffering from different type of disease, then automatically there is a decrease in the mental level. The mental stamina ta कम हो जाए, motivation level ta कम हो जाए. एमते सब लगे कि किसी गोटे बड़ रोग हो गला, so all of sudden मोर death हो कि heart attack हो कि cancer हो कि, so these are the general and natural feelings as a human being we can think about. So एटी हमें कौन देखुचे ना, mental disorder अनेक समय रे अनेक बड़े non communicable disorder और non communicable disorder पाइन एटा बहुत जन को होता है, एंड स्पेसिफिकली कोड देखिले अर्बन एरिया रे होता है. एवं यदि आउ किछि डाटा देखिबा, ये कहूची नियरली 1 in 40 and 1 in 20% सफर फ्रॉम पास्ट एंड करंट डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली. पास्ट 40 जन रे जणे पास्ट डिप्रेशन ने, 20 जन रे जणे करंट डिप्रेशन ने पीड़ित. कोन कहली 40 रे जणे पास्ट डिप्रेशन ने, 20 जन रे जणे करंट डिप्रेशन ने पीड़ित. So stress disorder जदि हमें देखिबा, ये approximately 3.5% of the total population ऊपर impact पकुची. Stress कहाँ ऊपर impact पकुची बा, कितने लोगों को ऊपर impact पकुची, around 3.5% of the population. And specifically जदि हमारा gender basis analysis करिबा, हम तो regional analysis कले, urban India रे it is maximum as compared to rural India. In the same way, if you will have a gender based analysis, then females they are suffering more as compared to male. Females are suffering more as compared to male. So जदि हमें आउ किछि डाटा रो स्पेसिफिक डाटा को देखिबा, ये कुछ 0% 9% of the survey population they were at the high risk of suicide. केते the survey population 0.9%, approximately जदि हमें देखिबा 1% people they are at the high risk of suicide. Means suicide पर्यंत, suicide stage पर्यंत को माने जीव, suicide stage पर्यंत को माने जीव. Those who are very highly suffering from this, those who are very highly suffering from this कोथरे ना, जो मानकर मेंटल डिसऑर्डर टा अधिक और अधिक, जस्ट अ सेकंड, जोटी मेंटल डिसऑर्डर टा हमको अधिक और अधिक देखियो मिलुची. देन ये कुछ नियरली 50% of persons with major depressive disorders reported difficulties in carrying out their daily activities. Daily activity करिवार मध्ये एतिके परसेंट लोक दे आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज. डेली एक्टिविटी रे एतिके परसेंट लोक दे आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो ये हला डाटा जोटा हमको मिलिची ये सर्वे परे, ये डाटा को हमें यूज करि परिबा हमर आंसर शीट रे. So it will give you a very natural look as well as a very unique look to your answer. तापर हमें आसीबा होमलेस इंडिविजुअल विथ मेंटल इलनेस. हमें एटी स्पेसिफाई हे जिबा जो मानकर मेंटल इलनेस अछि. मेंटल इलनेस हम देखले कहार भी रही पारे, लेट्स सपोज पर्सन इज वर्किंग प्रोफेशनल मेंटल इलनेस रही पारे, बा कोनसी प्रकार एंगेजमेंट कोनसी पर्सनल लाइफ रे मध्ये मेंटल इलनेस रही पारे. बट स्पेसिफिकली हम एटी डिस्कशन करबा जो माने होमलेस पर्सन सफरिंग विथ मेंटल इलनेस. देखिथिबे समस्त कि जो माने रास्ता रे बुलचंती एंड मेंटली डिसऑर्डर पीपल
and they don't have a home, it means article 21, their article 21 of the Indian constitution is completely violated. Now emanku kon darkar jo mankar ghar nahi, those for homeless person, they don't have a shelter, it means basic necessities khadya vastra basagruh they are deprived of. Semanku they should have an access to food, shelter and cloth. So first option jodi ame dekhiba to cloth, shelter and food, this is not available. So emanku kon darkar na they need rescue, khali rescue kale habani, they need rehabilitation. But rehabilitation am gate ko type of rehabilitation in general dekhiba ko miluchi na forced relocation to the hospital or to the shelter homes. Forced relocation because there is no second option. And even जदि हमें सोशल जस्टिस अनुसार देखिबा, their view is also important. They have a right to take their own decision related to their own life. So they should be asked whether they are interested to move or relocate to hospital or shelter home or not. Now the question is they are not in a proper set of mind to answer this question or to take a decision for themselves. That's why it is a forced relocation. बाध्य हमें ताको नवा पाई बस मान को नेकी एडी हॉस्पिटल बा कोन शेल्टर होम रे रखिया पाई. Now problem कोन जेतबे शेल्टर होम को से माने जाउछन, now the real story starts or the pathetic story starts from here. So they are being physically, mentally abused, sexually abused many a times. खाइबा को काको मिलन, right to food is not available, right to education is not available, right to a proper medical facility not available, proper attendance they are not available, they are living in a very unhygienic condition, plus proper sanitation nahi. These are the different issues जो माने जोटा से माने को फेस करिया पे पड़ुछ. And अनेक गुडे NGOs they are also involved in this case, but NGOs with a proper heart and soul they are not working. Proper heart and soul, they are not working for the development, rather their objective is something else. So automatically jo man homeless individual having mental illness, directly article 21 is violated. अगर कौन violation हो चुकी है? Article 21. So the male or female देखिबा, mental health condition is higher among the males as compared to female. Mental health conditions it was higher in males as compared to female. Then mood disorder देखिबा, mood disorder is maximum found among women. Kodi mood disorder that is maximum found in women. ताको हम यूज करि परबा, ई सब डाटा को हम यूज करि परबा इन सोशल जस्टिस इन डिफरेंट टॉपिक. हम बगर टॉपिक अछि वुमेन एम्पावरमेंट बा वुमेन रिलेटेड टॉपिक मध्ये मोट रहलो. So male in the age group of 30 to 49 years, they were the most affected mental illness. Now why 30 to 49? Why 30 to 49? Kahin ki 30 to 49 kahin ki na, because that is the age where people are financially not stable. They are moving towards having a family, moving towards having the next generation offspring, children, then children's education, children's marriage, ghara kariba, ye sabu everything financial burden is there within this range of age. So that's why maximum male people within this range of age they are affected with mental illness. Then the resident of urban metros, they had a greater prevalence of mental disorder, already more discussed as compared to rural people, and persons from lower income quantile, they are having a more mental disorder as compared to persons those who earn more. Now the region is very clear. Here the region is very clear. Lower income group re jo mane achanti semanakar kon, because nothing is more painful than poverty. Nothing is more painful than poverty. Those who are suffering from poverty, they cannot be happy throughout their life because they don't have basic access to minimum needs which are required in your lifetime. Basic needs को semanakar access na tha, including food security. Including food security. So आमे जदि स्कीम देखिबा, अनेक गोटे स्कीम मध्ये अछि गवर्नमेंट रो. व्हाट आर द स्कीम्स? द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी. कोन कहली? नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014. It calls for universal access to quality services. It calls for universal access to quality services, equitable distribution, community participation, right-based approach, intersectoral coordination, use of appropriate technology and holistic approach. इटी कौन लिखा ला? इटी कौन लिखा ला? पूरा मेंटल हेल्थ रो पूरा इटी कौन दरकार हमको, व्हाट इज द सॉल्यूशन इज मेंशन्ड हियर. नाउ एटा को कोड यूज करिवे जहां इटी मु लिखि छि एक्जेक्टली ए नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी रो डेफिनेशन इटी जा लिखि छि, एटा को यूज कोड करिवे. ना दिस इज अ वेरी गुड, इट कैन बी यूज्ड एज अ कंक्लूजन लाइन और आउ कोन से अगर को इंट्रोडक्शन लाइन हिसाब रे मध्ये यूज करि पारि. तो देखो कहीं को इंट्रोडक्शन में डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कौन पचारे से अनुसार कहली एक्जेक्टली जहां लिखाई छे एज इट इज यू कैन पुट इन योर आंसर पेपर.
व्हाई को कारण पई एटा को करि परिबे बुझौची इट डी लाइन लिखाई एटा कॉल्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन राइट बेस्ड अप्रोच इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन ये सब पॉइंट दीज आर वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स एंड दीज आर सॉल्यूशन सेंट्रिक पॉइंट्स माने कोन ना ये सब गुडा को सॉल्यूशन जहां थ्रू रे हमें मेंटल इलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करि पारिया सो कंक्लूजन बाय इंट्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एटा को कोड यूज करिवे तो को फास्ट एग्जामिनर पढुची कि एही पॉइंट ऊपर कैंडिडेट फोकस करिची इट शोज योर ब्रॉड होराइजन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इश्यू ये इश्यू काहे की क्रिएट होची एवं इश्यू को हमें को वे रे समाधान करि परियो को वे रे ये इश्यू को हमें समाधान करि परिबा एटा हमको ब्रॉडली बुझा पड़ जाउ सेत पई मु कहली आपको यूज करि परिबा एज इट इज रिलेटेड टॉपिक आसुची इन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देन इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एथिरे प्रोविजन अछि रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ केयर and services for persons with mental illness and for protecting promoting fulfilling the rights of such person during delivery of mental health care services ये simply कहउची कि protection of rights कहार protection of the rights of the person who is suffering from mental illness एटा कि कहता mental health care act तापर नेक्स्ट दिबा नेशनल ट्रस्ट होची गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी मींस दे आर created by a law statutory body kiye now which are created by a law back of which a law kaha under achi na under Ministry of Social Justice and Empowerment it was set up under the National Trust for the Welfare of Persons with Autism Cerebral Palsy Mental Retardedness and Multiple Disabilities Act so 1999 re ye act astila so this is based on the principle of United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability so united gote international convention madhya achi related to rights of persons with disability jo mane disable now the question is why to give reservation or why to give special assistance to these PWD people persons with physical challenges ba jha ko divyang कहूचे सेठी हमको दबार स्पेशल नीड दबार आवश्यकता कोन स्पेशल असिस्टेंस दबार आवश्यकता कोन अछि because naturally they lack in something जो पर्सन ने से माने नेचुरल लैक करचंती सोशल जस्टिस रो अर्थ होची ताको सेही जगह रे अपलिफ्ट करे सेही जगह रे अपलिफ्ट करबा लेट्स से जनकर लोकोमोटर डिसेबिलिटी अछि लोकोमोटर डिसेबिलिटी माने लेट्स से ऑर्थोपेडिकल चैलेंज चाली बारे किछि प्रॉब्लम अछि सो किछि गोटे बडा मॉल अछि जो मॉल को से चढ़ी के जाई परिबनि सो जो मॉल को से चढ़ी के जाई परिबनि बा हमरो एयरपोर्ट अछि बा रेलवे स्टेशन अछि जोटी कि से चढ़ी के जाई परिबनि इट मींस यदि सही बलिया सुविधा सुजोग हमें प्रोवाइड न करूचे इट मींस वी आर सिंपली डिनाइंग हिज एक्सेस टू दिस पब्लिक प्लेसेस now denying access to public place isn't it a violation of fundamental right हमें fundamental right पढ़िला बेले ई पॉइंट ऊपर डिस्कशन करि नथले कि यदि पब्लिक प्लेस को access cannot be denied to the public places on different grounds so एठी हम एक्सेस ता को डिनाय न करी कि से एक्सेस ता प्रोवाइड कर हम एक्सेस प्रोवाइड करते टू पब्लिक प्लेस दिस इज सोशल जस्टिस with naturally जो पर्सन ने जो पॉइंटर से मानने लैक करूचंती सेटा प्रोवाइड करियो बाय द गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करिवार अर्थ हो सोशल जस्टिस एंड दिस इज द वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिस इज एम्पावरमेंट so united nations no madhya gote convention achi on the rights of persons with disability which is based ama jota asila at statutory body asila national trust asila se air upare hi depend kurchi ba utilitarian philosophy ta basically derive kurchi या से आउ कोन करूची ना ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करची फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट कहारा ना पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी से मानकर कैपेसिटी डेवलपमेंट पाई ये कोन करची इट वर्क्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज सो there is another scheme also जो scheme रो ना होची दिशा scheme कोन दिशा scheme होची early intervention and school readiness scheme एथिरे early intervention कोउतरे ना those who are affected persons समान को different type of intervention करा जिवो समान लाइफ रे so that they can be empowered जो मिनिस्ट्री ऊपर हम डिस्कशन करले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये पाखरे अनेक गुडे स्कीम अछि टू एड्रेस अल्कोहल एंड अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एडिक्शन ना साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो गुडा को ताकू यूज करी की बा ताकू यूज कला परे मध्ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होछि ताकू ठीक करबा
different type of scheme has been implemented. Now these are man-made. एटा को जानी सुनी कि after using these drugs or psychotropic substances, mental illness को हमें बढ़ाऊचे. So it is different type of scheme implement करा जाउछ. Ministry of Education, it is also implementing another scheme, Ayushman Bharat School Health and Wellness Program in collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare. So there are certain schemes, certain initiatives which are being implemented in collaboration with different ministries, or different ministries they are there collaboratively seman kon korchanti na isu different scheme ku implement korchanti. Now what are the issues which needs urgent attention? को point रे हमको urgent attention एटी दबार आवश्यकता अछि. यदि हम देखिबा large population of the country, the numbers affected by mental health conditions are significant. So National Mental Health Survey 2015-16, it showed that 150 million people in India, they need intervention for mental disorder. केते कोइ 150 million people सेमान को कोन दरकार ना mental disorder पई intervention ना आवश्यकता अछि. mental disorder पई intervention ना आवश्यकता अछि. कहा को ना 150 million ता माने देखंतु total population केते परसेंट को mental disorder related intervention आवश्यकता अछि. एटी intervene की करि परिबो? NGO intervene करि परिबे. We can have a 24/7 helpline center. The helpline center कौन करियो ना सेमान को protection provide करियो. Whenever they feel low, they can directly contact the helpline center and they will motivate. सेमान को motivate करके रखिबे. So mental illness कौन? Like physical illness, it cannot be cured by using medicines. Medicine देकी psychotropic substances पर drugs देकी medicine देकी आपको हम ठीक कर परिबे. So it needs social attention, it needs social cohesion. ये सब आवश्यकता अछि. ये सब पॉइंट गुडा कर आवश्यकता अछि. So currently जदि हम देखिबा less than 30 million they are seeking care at present. And some mental disorders, they had a treatment gap of more than 60%, with the highest treatment gap being for alcohol use disorder. Alcohol use disorderpai हमको highest treatment gap देखिया को मिले, which is 86%. So हमें जदि देखिबा in general 20 रु गोटे लोक 1% out of 20 they are suffering from mental disorder by depression. They are suffering from depression. And out of these people, 39% they suffer from severe depression. 3 out of 4 persons with severe mental disorder, they have a disabilities affecting their work, family, education, and other aspects of life. Now think about the economic loss or the emotional loss that we are having because of mental retardedness or mental illness. So their contribution to total production, to total GDP comes down. It is lowered down. GDP decreases, national income decreases, per capita income decreases. So we cannot consider them as a human resource when they are not adding something to the GDP or to the, they are not contributing something to the total production. So our objective कौन ना एटा को हमको यूटिलाइज करिया को पड़िबो. जति कि ह्यूमन रिसोर्स वी हैव ताको हमको यूटिलाइज करिया पे पड़िबो. Then over 18 years जो माने अछंती सेथरो मु कहली 0.9% they are at the high risk of suicide. 0.9% they are at the high risk of suicide. So 14.6% of people, about 160 million currently, they were current alcohol users between 10 and 75 years of age. Between 10 and 75 years. Now look at this age. Why I am drawing your attention to this age is 10 years adolescent or just child stage रे अछि, 75 old age elements, old age disorder, and they are suffering from, they are addicted to alcohol. Here. Okay. So 2.1% of country's population, that is 22.6 million people, they use opioids, which includes opium, heroin, and different pharmaceutical products. ए मेडिसिन गुडा को बा ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस गुडा को अनेक लोक यूज करछन्ती, जहार जो मानकर नंबर कहते ना 2.1% of total population. Now what is the way forward? As a solution, what can we do for these people, those who are having mental illness? The most important is awareness, and the most important solution is a social solution, or we can talk about a socio-economic solution. Now here we can go for legal approach. But they are not mostly effective. What is mostly effective is socio-economic approach or socio-cultural approach. They will be more effective. Now law formulate कर देले कौन हो? Law formulate कर देले
those who are suffering from mental illness सेटा कमी जीवनी rather socio-economic approach रे if you will have connection with them, interaction with them, cooperation, coordination with them, then automatically their mental tension will lower down, सेटा automatically decrease ହେଇଯିବ. So कौन दरकार हमको ना awareness दरकार related to what socio-cultural awareness दरकार, socio-cultural awareness दरकार. So instead of government, instead of think tanks, NGOs, society has a greater say in this regard. Society has the greater say or society are best solution centric solution bahar kari paribo in case of awareness formation. Then is investment. Now investment kiye karibo? Investment by government, investment by private sector. By private sector kemti karibo mu karibini under CSR activity karu, corporate social responsibility under karu, taku tax benefit guda ko mili jibo. So private sector tebe hi interfere karibo, otherwise interfere karibo. Now people's participation, this is the most important one. This is the most important one and the most important remedy, effective remedy. So this is about social cohesion. This is about increasing what? Increasing the social cohesion. Then is institutional support. Here support can be provided by NGOs, support can be provided by government, support can be provided by private sector, support can be provided by civil societies. ये समस्त एटी इन्वॉल्व होई परिबे बा स्टूडेंट कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी एंड साइकियाट्रिस्ट जो माने अछंती, साइकोलॉजिस्ट जो माने अछंती, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, एवरीवन दे कैन इंटरफेयर इन दिस केस. तो आपको हमें कौन कहूचे ना, को हमें कहते इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. बुझेला कौन कहूचे आपको? नाउ दिस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. क्लियर? तले मैं आगु को जीवा, नेक्स्ट पॉइंट को जीवा. नेक्स्ट पॉइंट को जीवा ताले हमें नेक्स्ट पॉइंट यार कौन कहूची? शिफ्ट फ्रॉम पैटर्नलिस्टिक टू लिबरेटरी स्ट्रेटजी. पैटर्नलिस्टिक रो अर्थ कोन? जोटी फ्रीडम ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़े ताको कहंदी पैटर्नलिस्टिक अप्रोच. एठी लिबरेटरी अप्रोच कोन? एठी लिबरल अप्रोच हमें देखौचे बा अधिक फ्रीडम दोचे. हियर मोर फ्रीडम, हियर मोर फ्रीडम. एठी कोन दोचे? हियर देयर इज लेस फ्रीडम, हियर देयर इज लेस फ्रीडम. सो लेस फ्रीडम रो मोर फ्रीडम आडू को हमें मूवमेंट करियो. कौन करबा एठी हमें? कौन करबा हमें? लेस फ्रीडम रो मोर फ्रीडम आडू मूव करियो. तो जोटी पैटर्नलिस्टिक रे कोन होती ना, मैं स्टेट इंपोजेस डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन. नाउ राइट टू लाइफ इज राइट टू चूज, राइट टू चूज, राइट टू लाइफ इंक्लूड करूची, मोर लाइफ इंक्लूड करूची कि मु कोन चूज करबी, वेयर टू लिव, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट शुड बी माय क्लोथिंग सेंस, व्हाट शुड बी माय शेल्टर, everything is included. So shift from paternalistic to liberatory approach is required, more freedom is required. Then is holistic and imaginative approach. Holistic and imaginative approach एटी हमें कोन देखुचे ना, supportive measures, supportive measures complemented by imaginative बा holistic strategy. जेमति कि हमें देखुचे discrimination, violence, social segregation ये सब ना हो. We should talk about social cohesion. Here we should talk about social cohesion. मुझे ना मैं already कहली कि the best remedy, the best strategy is the social approach. Is the social approach. So topic 1 clear. Topic 1 हमें discuss करें on a good important point. तापर हमें next topic को जीवा, second topic को जीवा. It is related to more efforts must be made to curb plastic production and promote alternatives. Plastic production को reduce करिबा एवं अल्टरनेटिव अप्रोच प्लास्टिक अगेंस्ट रे जदी हमें आउ किछि यूज करूचे, प्लास्टिक अगेंस्ट रे जदी हमें आउ किछि यूज करूचे ताकू केमते हमें प्रमोट करि पारि हला, ताकू केमते हमें प्रमोट करि पारि. यार करस्पोंडिंग सिलेबस कोन ना, एनवायरनमेंट समस्त एटा तो इजीली जानि पड़थुनी. एनवायरनमेंट गवर्नेंस काई कि ना इट इज स्कीम रिलेटेड अछि, सेतमे एटा गवर्नेंस भितर आसे, बट मोरली ऑन एनवायरनमेंट. सो जदी वर्तमान हमें देखिबा इंडिया रो अनेक गुडे सिटीज, many cities of India, they are facing a significant plastic waste problem. According to 2020-21 report by Central Pollution Control Board, 4 million tons of plastic waste are generated annually. Kete कहली टी
4 million tons. Point to be marked, point to be used in your answer sheet. This point is to be used kete 4 million ton. Output use kari pare ye jaha jaha me discuss korche Hindu editorial is not only useful for general studies papers but also it will be used for essay. तो essay writing ପାଇଁ ମଧ୍ୟ यूज ହେବ ତ ମୁଁ essay ପଢେଇବି essay ର କ୍ଲାସ ନେବି मेंस ପାଇଁ ସେତେବେଳେ डिस्कस କରିବି कि को प्रोविजन को ଆମେ କେତେ रिलेवेंट वे रे को जगह रे इनकॉर्पोरेट कर पाए हला सो 84 मिलियन टन लु जदि हम देखिबा मैक्सिमम रिसाइकल केते होउची ना मैक्सिमम रिसाइकल होउची केते ना 1 मिलियन टन नॉट मोर देन दैट केते 1 मिलियन टन नॉट मोर देन दैट रिसाइकल होउची तो जो देखला हम रिसाइकल रीयूज रिसाइकल करबा दरकार रीयूज करबा दरकार तेबे ही प्लास्टिक पोल्यूशन ता डिक्रीज हे परिबो देन व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट इज एनवायरनमेंट चोक एनवायरनमेंट चोक रे यार बहुत भल एग्जांपल बा नेगेटिव इंपैक्ट जोटा वर्तमान हम ऊपर पडुची दैट इज मुंबई फ्लड अर्बन एरिया रे इंडिया रो मेनी ऑफ द अर्बन सिटीज दे आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और मे बी मैन मेड कैलेमिटीज फॉर एग्जांपल दिल्ली रो कथा जदि हम कहबा एनवायरमेंटल पोल्यूशन केते अधिक होउची दिल्ली रे देखो मुंबई रे अर्बन फ्लड बैंगलोर चेन्नई वाटर स्कार्सिटी पीवा पानी मिलुनी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सो आप हमें कौन कहूचे ना एनवायरमेंटल चोक सो एटी हमें देखुचे एग्जांपल कौन ना मुंबई फ्लड प्लास्टिक लॉक्ड ड्रेन होबा कारणरू मुंबई रे हमको अधिक फ्लड देखिया को मिलुचे देन आउ कोन ना मराइन पोल्यूशन कौन कहली ना मराइन पोल्यूशन बायो एक्युमुलेशन यूट्रोफिकेशन बायो एक्युमुलेशन यूट्रोफिकेशन ई सब एनवायरनमेंट रे पडितबे एटी कोन होतला बायो एक्युमुलेशन पॉल्यूटेंट इंक्रीज हे जाउछ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को इंक्रीज हे जाउछला बायो एक्युमुलेशन बा एटा एक्युमुलेट हे जाउछ पॉल्यूटेंट सो क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट इज इंक्रीजिंग हियर यूट्रोफिकेशन ने कोन होउची यूट्रोफिकेशन ने केतळ होता तो मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर देन सरफेस रन ऑफ तापर सेटा पॉन्ड को पळि आसुची ता ऊपर गोटे लेयर जमी जाउची कोन वीड गुडा कहि जाउचंती तो वीड हे जापर से यूट्रोफिकेशन हमको देखिया को मिलछ सो कांसेप्ट ऊपर पढिथिबे एनवायरनमेंट रे सो प्लास्टिक पोल्यूशन मेराइन पोल्यूशन बायो एक्युमुलेशन यूट्रोफिकेशन मध्ये क्रिएट करूची माइक्रो प्लास्टिक पय हमको डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज देखिया को मिलछ कोन होची हेल्थ इश्यूज लाइक रेस्पिरेटरी इश्यू हमको देखिया को मिलछ कोन देखिया को मिलछ हमको ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखिया को दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ प्लास्टिक पोल्यूशन सो आको यूज करिवे एसआर यूज करिवे एंड ऑन अदर पेपर रे जीएस रे क्वेश्चन देखि कि ये पॉइंट को यूटिलाइज करा दे पारे नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट को हमें जिबा द प्रॉब्लम विथ इंडिया ब्लॉकिंग टू चाइनीज प्रॉब्लम विथ इंडिया ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज ना को रिलेटेड द को पॉइंट रे हमें चाइनीज मान को ब्लॉक होचे करस्पोंडिंग सिलेबस आर कोन इकोनॉमिक्स बा इंटरनेशनल रिलेशन मध्ये ये गोटे टॉपिक So वर्तमान कौन होची इंडियन अथॉरिटीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द वीजा फॉर चाइनीज टेक्नीशियन माने इंडिया को अधिक रु अधिक नंबर रे आसु काहे कि आसीबे ना इंडिया रे टेक्नीशियन मानकर नंबर कम इंडिया रे टेक्नीशियन मानकर नंबर कम सो टेक्नीशियन मानकर नंबर कम काहे कि ना देयर इज अ स्किल गैप हम पाकर स्किल अवेलेबिलिटी सेति नहीं देयर इज अ स्किल गैप बिटवीन इंडियन वर्कर्स एंड चाइनीज वर्कर्स So जदि सेमाने इंडिया को आछन देन देयर विल बी मोर प्रोडक्शन कोन हो एंड देन देयर विल बी मोर प्रोडक्शन सो हमें चाइनीज टेक्नीशियन ऊपर इंडिया रे डिपेंडेंसी काहे कि बिकॉज़ ऑफ स्किल गैप इंडिया रे टेक्नीशियन पाखरे सेति के स्किल नाही इंडिया रे टेक्नीशियन पाखरे सेति के स्किल नाही जेति के स्किल चाइनीज टेक्नीशियन पाखरे अछि न जदि हम वीजा इश्यू देखिबा एटा 2000 मसिया 2 लाख सॉरी केते थिला एटा visa is to decline from 2 lakh in 2019 to 2000 in 2024 2019 मसिया रे वीजा इश्यू केते होतला ना 2 लाख वीजा इश्यू होतला कारण चाइनीज टेक्नीशियंस दे आर कमिंग टू इंडिया वर्तमान जदि हम देखिया 2024 रो कथा 2000 सेटा कोड पहुंचछ ना मात्र 2000 रे पहुंचछ काहे कि एटा केबे आसिला ना या भितरे 2020 रे हला border dispute जेतो इंडो चाइना border dispute हला ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड रिड्यूसिंग approval to the visa of Chinese technicians to India. So, जेहेतु ये कॉम्बिनेशन दिस इज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज दैट इज एक्सेप्टेड सिक्योरिटी इश्यू पाई हम एटा को कम कर देले बट देयर इज अ लॉस ऑफ $15 billion
over past 4 years there is a loss of $15 billion economy loss तो ये क्रिएट होची कोन पई ना बिकॉज ऑफ लेस स्किल डेवलपमेंट को एक्सेस आम पाखे कम होची वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लाइक दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना so this scheme is dedicated for skill development still despite of having different type of schemes for skill development Indian workforce is lagging behind in terms of acquiring skill we have human resource but they don't possess sufficient skill. Now coming to the number of jobs which are open in the market, in the economy, the number of jobs open is high. But as per the requirement, the labor force, they don't acquire sufficient skill. यही कारण पाई अधिक अधिक जॉब मध्ये खाली पड़छ. So this is a gap between the requirement or demand from the corporate side and supply from the labor side. Labor force को technically sound होगा को पड़ियो बा skill develop करिया ପାଇଁ पड़ियो so that they can handle or they can accommodate with the requirement from the corporate sector. So skill development केते बडे पारियो बा को पॉइंट को स्किल डेवलपमेंट रे फोकस करबा दरकार. प्रथम होची इंडस्ट्री ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी कोर्स. यूनिवर्सिटी जो कोर्स आसुची ये सब इंडस्ट्री ओरिएंटेड होबा दरकार so that people after passing this examination university level examination they can directly work in any industry so that they will be more skilled सेमान पाखु स्किल आसीजो. Then industry and academics collaboration. कौन कहली industry and academics collaboration. They can have internships. Internship जेमति अछि internship करि परिबे बा industry जहां requirement same जिंस can be depicted in the curriculum रे तक हम depict करि परिबे बा तक हम utilize करि परिबे. Then students mindset increase करिया पय पड़िबो कि skill acquire करन. Knowledge is different and skill is different. Then research and innovation is required. Then upskilling existing workforce हम तक जो existing workforce अछि तार skill बढ़िबा ताको upskill करियो so that there will be less requirement from the foreign workforce. Then hand holding startup बढ़िले automatically हमें skill development ऊपर फोकस करिया बा skill development को increase करिया. Now हम ये तो गला गोटे साइड domestic workforce को हमें develop करियो. Domestic workforce को हमें skill develop करिवा ताको skill acquire करिवा ता सहित हमें फॉरेन नॉलेज को इंटीग्रेट भी करिवार आवश्यकता अछि. सिक्योरिटी इश्यू पई हमें चाइनीज टेक्नीशियन को इंडिया को अलाउ कर दैट इज फाइन बट यदि यार इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखिबा यदि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट देखिबा बा फॉरेन नॉलेज को हम केते एक्वायर करछ से एस्पेक्ट देखिबा देन दिस इज द रॉन्ग फेनोमेना. वी शुड एक्सेप्ट एंड वी शुड इंटीग्रेट फॉरेन नॉलेज इंटीग्रेशन हवा दरकार. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन then globalization of what? Globalization of not only globalization doesn't refer to exchange of goods and services. It is all about exchange of knowledge as well. LPG model 1991 we have adopted. Globalized time period, liberalization occurred, privatization occurred. So this is a very narrow concept, narrow aspect of globalization. The true meaning of globalization also includes integration of foreign knowledge. Foreign knowledge को मध्य हमको accept करिवार आवश्यकता अछि. We can utilize the foreign knowledge. For example, there is a successful model 1980s रे कोरिया रे गोटे सक्सेसफुल मॉडल थला. ये कोन कला ना फॉरेन नु डिफरेंट मशीन किनी के आनिबे ताको डिसमेंटल करिवे पुन ताको असेंबल करिवे to increase their technological knowledge. So Korean people, they became more sound for the use of different type of machines and equipments because government invested on this. So reverse engineering रे तक मारिबे डिसमेंटल करिवे पुणे आउथरे जोड़िबे तो ऑटोमेटिकली ताकर नॉलेज इंक्रीज होला. ता ऊपर चाइनीज स्ट्रेटजी चाइनीज माने मध्ये सेम जिंस करिसंदी इकोनॉमिक ग्रोथ को 1980s रे चाइना रे हला से माने मध्ये सेम जिंस करछन ताकर स्किल डेवलप करिसंदी वर्कफोर्स रो स्किल डेवलप करिसंदी. फॉरेन नॉलेज को इंक्रीज करिया पे देन जियाओपिंग सी इनिशिएटिव स्टार्ट करथिल जोतरे जो माने पॉलिसी मेकर से माने को इंटरनेशनल स्टडी टूर रे पठा गला so that they can attract foreign investors. For example, India ro policy makers they will be moving to foreign countries. Let's say public policy पढ़िया पाई से माने जिबे जॉन कैनेडी स्कूल जिबे बा अदर स्कूल जिबे इंटरनेशनल जोटी इंटरनेशनल कैलिबर्ड organizations institutions अछन academics रे those who are excelled in terms of research and development. Policy makers can be sent there to have higher studies or work integrated program
work integrated program jemti कहली John Kennedy School, there is a program like mid career MPA, mid MCMPA, mid career masters program in administration. People having 5 years of experience in government, non-government sector, they can approach for this course. The short-term course, master's level short-term course, where people can acquire knowledge on policy formulation. Now, policymakers, when they will move to foreign countries, now they can attract foreign investors as well. When foreign investors, they will come to India through FDI, automatically they will use foreign technologies. So, foreign technology को मध्य use करिवे, हाँ कि नहीं? So these are the importance of acquiring foreign knowledge. Now way forward what is the solution here? हमें solution कौन करी परिवा? What should be the solution? This is the, we can speed up the visa approval process. It is visa approval process को speed up करी परिवा, so that more Chinese technician they will come to India. They will be involved in economic activities. So in the meantime, we can have KT, knowledge transfer. In the meantime, I mean knowledge transfer from the Chinese technician to the Indian technicians. Then is enhanced domestic education system, skill development process to enhance domestic education system to enhance. These are the basic requirements. These are the basic requirements. Then as खाली हम economic aspect को ध्यान देवानी, security aspect is also important. हमको ये security aspect को मध्य देखिया पाई पड़ियो. Security, internal security, external security, सेटा मध्य important. ये सब को आख्या के रखी की we should proceed. So this is the way forward. Now this topic is clear. Now we'll be moving to the next topic on license Raj for the digital content creator. License Raj for digital content creator. So ये टाइप टॉपिक कौन? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टॉपिक कौन? टॉपिक होची एटी सिक्योरिटी इश्यूज रे आसुची, साइबर सिक्योरिटी प्लस गवर्नेंस दुटा जाक टॉपिक रे आसुची. सो ना एबे जो जनरल इलेक्शन गला, जनरल इलेक्शन परे देखिए बहुत गुडे देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने कहा को इन्फ्लुएंस करछन ना टू द पब्लिक. नाउ किछि दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड आउ किछि दे आर सपोर्टिंग द अपोजिशन. इट मींस influencers they are politically divided. Influencers are politically divided. किछि गोटे पार्टी को आउ किछि आउ गोटे पार्टी. Now government कोन करियो चेष्टा करछि ना through this bill, government is trying to control online political commentary through broadcast regulation bill. या ऊपर broadcast regulation bill कथा जदि हम देखिबा, या ऊपर existing law हम पाखरे कोन अछि ना, there is IT rules 2021. IT rules 2021. सो ये कोटी दीटा मिनिस्ट्री मिसी के कंटिन्यू कर. एटी देखंतु ये जो डाटा मुझे देछि, दिस डाटा शोज प्लेटफॉर्म यूज को केते परसेंट लोग डे टू डे बेसिस रे को प्लेटफॉर्म को यूज करछन. 39% पीपल दे आर यूजिंग व्हाट्सएप, 35% पीपल यूजिंग यूट्यूब डेली बेसिस, फेसबुक यूज करछन 26% पीपल ऑन डेली बेसिस. दे आर यूजिंग काहे की यूज करछन ना टू गैदर information. I may be related to politics, may be related to society, may be related to economy. So semane utilize करछन ए प्लेटफॉर्म को knowledge acquire करिया पय. So केमती ना, these are digital platforms, they are not print media like paper newspaper नुहे. So digital platform को ये control करियो चेष्टा करछ काहे कि ना through YouTube videos, other type of videos, through application videos बा shorts माने influence करियो चाहन कहा को ना public. सेट पय ये bill आसे. For this purpose, this bill has been proposed. So implication, ये bill रा implication कौन ना, प्रथम होची scope expansion. ये कहूची जो माने individual commenter, individually जो माने comment करूचंदी तांकु ये digital news broadcaster हिसाब रे consider करियो. जो माने content creator, content बनाउछथि online platform रे, समान को OTT broadcaster हिसाब रे consider करियो. So automatically समान को यूजर थ्रेशोल्ड अनुसार कहार केते यूजर जहार जते व्यू अछि सेही अनुसार दे शुड बी रजिस्टर्ड टू द गवर्नमेंट पोर्टल रे समान को रजिस्टर करिया पय पड़ियो. नाउ टू सम एट दिट एस्पेक्ट अछि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हम जानि परबा. पॉजिटिव एस्पेक्ट कोन, people are using mass media, electronic media like YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter to create different type of chaotic situation in the society. They are misusing, misleading the public. किछि भूल इंफॉर्मेशन बाहर कर दछन. Many times it is found communal violence, communal riots, they are based on a false news which is broadcasted through social media platform. अनेक गुडे communal news, communal riot हमको देखिया मिलुची जोटा गोटे भूल बा गोटे मिछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना क्रिएट होची. बुझि पाले.
सो सेथि पई एमान को रेगुलेट भी करिवार आवश्यकता अछि, दे शुड बी रेगुलेटेड इन दैट एस्पेक्ट। प्रथम कथा। द्वितीय कथा यदि हम देखिबा नाउ आर्टिकल 19 इज इन क्वेश्चन। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केते इंटरेस्टिंग देखो दुईटा जिंस कंट्रोवर्शियल टॉपिक। गोटे साइड रे इन वन साइड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इट मींस प्रोटेक्टिंग कम्युनल वायलेंस ना हो। सेकंड कौन कहले ना आर्टिकल 19 इज इन क्वेश्चन। Now, Article 19 got freedom of speech and expression. Through all these type of bills, the government is trying to impose restriction on your freedom of speech and expression. So, Article 19 ऊपर encroachment, Article 19 को narrow down करिया को चेष्टा करा जाउछ by the government when government is trying to formulate such type of acts. Now, again, the legal background. Come to the law. What the law says? What about Article 19 of the Indian Constitution? Whether it is an absolute article or this is reasonable restrictions can be imposed. The answer is yes, reasonable restriction can be imposed. What are the grounds? The grounds which are stated there in Article 19 में जो ground statement state करानी जेमते कि security is the cause of concern. Security is the cause of concern. So यही ground रे Article 19 ऊपर मतलब reasonable restriction लागी पारिबो. But reasonable restriction लागी पारिबो. Now what is the motive of the government? How it aspect? एठी government रो motive ये आही पारे कि ये political news बा जो माने गवर्नमेंट को एक्सपोज करूचंदी ये ताकू सेमानकर वॉइस को लो डाउन करिया पई मे बी एक्ट यूज करि पारे, ये बिल को या एक्ट को यूज करि पारे। नाउ दिस इज द डार्क साइड ऑफ द एक्ट फॉर्मुलेट हेगला कोन पई ना सोसाइटी रे प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ए कारण पई एक्ट प्रमोशन करिया को प्रोटेक्ट करिया को चाहू गवर्नमेंट। नाउ ये ताको नेगेटिवली भी यूज करि पारे कहा अगेंस्ट इट जो माने गवर्नमेंट को एक्सपोज करछन थ्रू ऑनलाइन और पब्लिक मीडिया, बिकॉज़ ऑल अदर मीडियास गवर्नमेंट हैव रेगुलेशन ऑन दिस। अलगा जहां न्यूज मीडिया देखछन से सब ऊपर गवर्नमेंट रो कंट्रोल अछि। सी इन जनरल डेमोक्रेटिक कंट्री ना हमें कोन मानछ, व्हाट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया इज द फोर्थ पिलर अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मीडिया चाहिले चेक करि रख पारे, मीडिया कैन रेज वॉइस ऑफ अनएम्पावर्ड पीपल, मीडिया कैन कोलैबोरेट कोऑर्डिनेट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, मीडिया कैन अपलिफ्ट और मीडिया कैन एनफोर्स इनकॉर्पोरेट सोशल जस्टिस टू योर पब्लिक लाइफ। Now media has a very big role in your day-to-day life. But problem the problem with the current media is they are sold. Many times it is found they have a nexus with the political parties. Or medias, they are born out of a political party or political party sponsored media. But a particular party a media house to sponsor, that is the important point. Now gotte jinsar dekhon ame kete angle upar discussion କରୁଛି, same point रे article 19 ର violation नहीं पारे, एटी कम्युनल वायलेंस ताको नहीं कि क्रिएट पारे, सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट पारे, गवर्नमेंट मिसयूज करि पारे पब्लिक प्लेटफॉर्म रो हैला। सो फ्रीडम ऊपर एटी एनक्रोचमेंट हे पारे, ये सब पॉइंट गुडा को दिस इज 360 डिग्री एनालिसिस। एही पॉइंट को बुझवा दरकार, सब एंगल भाबवा दरकार एंड एकु इनकॉर्पोरेट करवा दरकार एवं यूज करवा दरकार इन आंसर। एही पॉइंट को यूज करंतु सो दैट इट विल गिव अ वेरी यूनिक लुक टू योर आंसर। नेक्स्ट देखंतु ये कोन कहू सेफ हार्बर डिजाइन। It introduces a new compliance regime independent of the ITR, enabling broad censorship powers for Ministry of Information and Broadcasting. Censorship power ये अधिक और अधिक दबा को कहा कि Information and Broadcasting Ministry को दबा चाहते। Third, vague provisions. So vague provisions risk arbitrary enforcement, creating a bureaucratic and politicized system of digital control. डिजिटल मीडिया ऊपर बा डिजिटल कंटेंट ऊपर पॉलिटिसाइज्ड कंट्रोल न हो, ताको पॉलिटिकल पार्टी बा पॉलिटिकल सिस्टम ताको कंट्रोल न करो। दैट शुड बी यूज्ड एज अ मीडियम टू एक्सचेंज व्यूज, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। नो डाउट false or misleading information they needs to be controlled, they needs to be regulated. Who is the regulator? Regulator is the state, regulator is the government, no doubt. बट यही केस रे जदि हम देखियो ये वेग प्रोविजन कोन कहूची ना अननेसेसरी एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट न ताले हम एठी कोन करबा, दीटा एस्पेक्ट हम डिस्कस करते यार, पॉजिटिव पॉइंट भी अछि, नेगेटिव पॉइंट अछि। जदि फॉर रे पचारची हम फॉर रे लिखिबा, अगेंस्ट रे पचारची अगेंस्ट रे लिखिबा। बट जदि बैलेंस व्यू मागुची ताले सब गुडा को डिस्कस करबा, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, तापर कंक्लूजन केमतिया दबा। कंक्लूजन सब गोटे फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन बा सॉल्यूशन सेंट्रिक कंक्लूजन है। हम गोटे सॉल्यूशन सेंट्रिक कंक्लूजन दबा, लाइक let's consider India as a democratic country. India is a democratic country. Being a democratic country, we should find a democratic solution to this point. So simultaneously, freedom should be respected. Freedom of speech and expression, that should be respected. Governance
Good governance shall be ensured to the public, and corruption, or if political party, if it does any type of wrong, then that should be exposed and it should come to the eyes of the public. So एमती गोटे न्यूट्रल व्यू आमे दबा एठी सब एंगल को देखि, so that conclusion आर गोटे प्रॉपर conclusion ये क्वेश्चन जदी आसुची तार आंसर दे पाइ. I hope everyone is clear about it. Now come to next topic, topic number 5. Topic number 5 is about key amendments to International Health Regulation 2005. International Health Regulation 2005. So एठी पैंडेमिक इमरजेंसी कहला न कोन बुझछे प्रथम कथा. पैंडेमिक इमरजेंसी कोन, जेमते हमें कोविड-19 देखले पैंडेमिक, ये टाइम पीरियड रे हमको कोन दरकार ना, वी नीड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. कोन दरकार हमको ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. व्हाई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड? Because people from one country, they were present in other country during the COVID pandemic, during the pandemic time period. Indians were present in Japan, present in USA, in UK, in Australia, in New Zealand. Simultaneously, other people from non-Indians, they were present in India. Now it becomes responsibility of the hosting country. It means India responsibility. जो माने foreigner India रखने तांको healthcare facility provide करे. Simultaneously, foreign government मानकर responsibility Indian मानको timely treatment prepare करिवा, provide करिवा, एवं not to discriminate between their own people and Indians, not to discriminate between their own people and foreigners. So that's why cooperation is required between two countries. केला प्रथम कथा. द्वितीय cooperation काहे की दरकार? द्वितीय cooperation is related to information sharing or knowledge sharing. Knowledge related मनकर कोविड रो जो वायरस थिला, से वायरस रो different form आसला, variety आसला, variant आसला हम देखिछे. So को variant को type of disease create करूची, तार symptoms कोन, को medicine को they are responsive, एगुडा को ये information it should be available throughout the globe. समस्त हमको ये information का available होवा दरकार to all the countries. To all the countries, clear? So cooperation again or collaboration again is required in this regard. So international collaboration बिना बा को गोटे country रो किछि गोटे shortage पड़ी गला medicine, like India was to deliver different medicines, pharmaceutical products to other countries. There is requirement, global requirement, and India is the leading producer of that particular pharmaceutical product. सेति में India कोन करा ना export करिवा पड़ेगा, and that is global collaboration, international collaboration. यदि India आज help न करिवो, then in other sense, other requirement रे मध्ये India को help रा आवश्यकता पड़ी पारे, assistance पड़ी पारे. जेंति just after independence हमको requirement कहार थिला ना, हमको requirement थिला food product, that's why food security was demanded, food security रा आवश्यकता थिला. बुझेला? So wide geographical spread, exceeding health system capacity, social and economic disruption, यही कारण मानक पे हमको दरकार कोन रैपिड इंटरनेशनल एक्शन. ये जोटा हमें देखुचे एटी पैंडेमिक यही कंडीशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैंडेमिक, इकोनॉमिक डिसरप्शन, हेल्थ सिस्टम रे डिटोरिएशन, एगुडा देखुचे हम पैंडेमिक रे डेफिनेशन को चेंज कराय छै, एंड सेही अनुसार हमको हेल्प रा आवश्यकता अछि. नाउ काहे कि ग्लोबल कोऑपरेशन अछि बुझेइली कि इन्फेक्टियस डिजीज को डिक्रीज करिया पे ग्लोबल कोऑपरेशन रा आवश्यकता अछि. यदि गोटे ए डिजीज फर्स्ट टाइम पे गोटे कंट्री आसी छै, ताले आइसोलेशन, लॉकडाउन, शटडाउन सेही होवा दरकार. सही कंट्री प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा जावा दरकार. इफ दैट कंट्री नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, अदर कंट्री प्रोवाइड करिवा दरकार. इफ दैट कंट्री नीड्स मेडिकल सपोर्ट, अदर कंट्री प्रोवाइड करिवा दरकार. दैट इज, दिस इज हाउ वी कैन लोअर डाउन द डिजीज. देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑलरेडी डिस्कस कली इंफॉर्मेशन शेयरिंग. रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे कोऑर्डिनेशन डिस्कस कली. एड्रेसिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सेम मेडिसिन यूज कला परे कोन आसो रिस्पांस. क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, हेल्थ इक्विटी एंड एक्सेस, it is important. Last point, health को equity and access, जोड़ा मैं कहली कि equal access for member of own country and for the foreigners. So health care facility को provide करा जावा दरकार. So this is the need for global cooperation. Next topic को हमें आसीबा on unnatural climate change. Unnatural climate change ये topic हम पे बहुत important, recently in news because of Kerala incident. Kerala पे ये news रे अच्छी, तो जे हमें देखिबा. And last year मानकर हमें देखुचे कि there is a climate change, there is global warming, climate change हमको देखिया को मिलुची, जहार impact day to day life रे हमन को ऊपर पडुची, हमर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर पडुची. इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाउची. कोन होची कहली, इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाउची. इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हेले कोन हबो, प्रोडक्शन कमिबो, नेशनल इनकम कमिबो, प्रोडक्शन कमिबो, नेशनल इनकम कमिबो, देन योर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज. सो क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट इकोनॉमी ऊपर मध्ये अछि.
ह्यूमन मेंटल हेल्थ ऊपर मध्य यार इंपैक्ट अछि सो ये कोन कहूची ना बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वेदर the disaster different type of natural disaster they are increasing in India so different type of calamities এটা हम कोड देखिया को मिला लैंडस्लाइड इन वयनाड डिस्ट्रिक्ट केरला जुलाई 30 रे हमको देखिया को मिला जुलाई 30 रे हमको लैंडस्लाइड देखिया को मिला केरला so because of heavy rain southwest monsoonal rainfall hela pare केरला रे हमको एटी because of heavy rain एटी लैंडस्लाइड हमको देखिया को मिला now landslides in this region whether this is a very new or old concept that doesn't matter whether landslide happened previously in Kerala or not whether flood happened or not that is a separate matter the importance is preparedness to the particular disaster preparedness to disaster to hobo disaster to many times it is inevitable tropical cyclone hobo flood hobo rainfall hobo automatically flood hobo then how we prepare preparedness is important and preparedness the disaster होउची सेते बेला हम preparedness केमती करि परिबा ना before disaster होबा पूर्वरु कोन करिया दरकार during disaster हेला बेले कोन करिया दरकार and after disaster कोन करिया दरकार before disaster हम कोन करिया दरकार ना rehabilitate करिया दरकार लोक कोन दरकार ना rehabilitation is required awareness creation दरकार then जोगुडा basic amenities तार availability दरकार basic goods तार अवेलेबल किवा दरकार ड्यूरिंग डिजास्टर एठी हम रेस्क्यू करिया ड्यूरिंग डिजास्टर कोन करिया ना रेस्क्यू करिया को माने लैंडस्लाइड रे फसिले अर्थक्वेक रे फसिले फ्लड रे फसिले हैला देन आफ्टर डिजास्टर कोन करिया ना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रांगर करिया एंड इट देन डेवलप डिजास्टर पर डेवलपमेंट होवा दरकार दिस इज साइकिल डिजास्टर पर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इंड्यूस डिजास्टर इज आल्सो देयर नाउ सी पार्टटा केते इंटरेस्टिंग डिजास्टर हैला पर भी डेवलपमेंट होउची डेवलपमेंट हला पर मदन डिजास्टर होची मोर डेवलपमेंट लीड्स टू डिजास्टर एंड डिजास्टर पर डेवलपमेंट होची ये सब गुडा केमती गोटे साइक्लिकल ऑर्डर ये सब गुडा गोटे साइक्लिकल ऑर्डर नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें ए रिलेटेड गोटे बहुत बढ़िया कविता अछि यदि के सुनिथिबे हिंदी कविता अछि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यदि के सुनि नथिबे सुनिबे सो ए रीजन में हमर इंपोर्टेंट कोन पई ना वेस्टर्न घाट अछि वेस्टर्न घाट कोट रहला इंडिया रे समस्त जानि जल्दी वेस्टर्न घाट को पर्सन रहला 8% रहला वेस्टर्न घाट हैना एठी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अछि वेस्टर्न घाट रे ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पढला वाला इंडिया रे पढते एठी ये रीजन ना एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इज वेरी हाई so human activities are regulated to protect biodiversity ecosystem and natural habitat this region is home to endemic species of plants and animals endemic species of plant and animal endemic माने ए रीजन में केवल समान देखा जाते मेनी स्पीशीज आर देयर जो गुडा को ए रीजन नाम को देखा जाते सो मन रखंतु ईएसए ऊपर जतल पढुचंदी बा वेस्टर्न घाट ऊपर जतल पढुचंदी एठी प्रीलिम्स रे भी क्वेश्चन आस परियो मेंस रे क्वेश्चन आस परियो दीटा इंपोर्टेंट कमिटी रो ना कहि ताको मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट हला गाडगिल कमिटी एंड के कस्तूरी रंगन कमिटी गाडगिल कमिटी कोन कहला ना 75% ऑफ वेस्टर्न घाट केते ना 129037 स्क्वायर किलोमीटर that should be designated as ecologically sensitive area western ghat 75% को declare कला as ESA and there will be restriction on development activities ठीक कोनोसी प्रकार developmental activity हेई पारिबो नाही एटा के कहला ना गाडगिल कमिटी कहला then कस्तूरी रंगन कमिटी कोन कहला it notified only 37% of the western ghat as ESA ecologically sensitive area so it reduced the extent compared to गाडगिल कमिटी report है ये आपको दो भाग में डिवाइड कर देला कहला कि कल्चरल ह्यूमन सेटलमेंट एंड नेचुरल नॉन ह्यूमन सेटलमेंट जोन एंड ह्यूमन सेटलमेंट बा कल्चरल जोन आ गोटे नॉन ह्यूमन सेटलमेंट जोन नाउ ये रीजन आउ पे इंपोर्टेंट काहे कि वेस्टर्न घाट यार ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस अछि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अछि ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस कोन ना मानसून रेनफॉल समस्त पडिथि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन ना फ्लोरा फोना अछि बा एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस तार यूटिलाइजेशन कोड करा जाउछि ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट रे cultural significance achi बहुत गुडे tribal population having a very rich culture very rich people in terms of culture in terms of their ethical values normative principles sociological approach they are very unique tribal population they are living here then environmental significance re कहली कि अनेक गुडे endangered as well as endemic flora and fauna species they are found here
सो ये रीजन ना इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस अछि सेति पई याको वेस्टर्न घाट को हम प्रोटेक्ट करिवार आवश्यकता अछि ए रीजन ने यूनेस्को हेरिटेज साइट मध्ये डिक्लेयर हेछि वेस्टर्न घाट रिसेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट मध्ये डिक्लेयर हेछि को स्टेट रे केतेटा हिज मध्ये एटा कहियो समस्त कमेंट रे समस्त जणाइबे एठी कि यूनेस्को हेरिटेज साइट वेस्टर्न घाट रे कोन अछि है नेक्स्ट टॉपिक को हमें आसीबो ऑन रेफ्यूजी राइट्स नेक्स्ट टॉपिक को हमें आसीबो रेफ्यूजी राइट्स रेफ्यूजी is a cause of concern for us refugee is a cause of concern for us why the people from other countries they are moving to India problem kono dekhuntu eti problem is all about resource availability the first problem is about resource availability ta ko ame kemti measure karuche resource availability ta ko ame kemti measure karuche na per capita resource availability this is equals to total resource of the country divided by total population total resource रे हमें डिवाइड कर दोचे कोन टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोचे तो एटी कोन पाइले कोले पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी जेतेबेले टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होचे केते बेले तो माइग्रेंट आछन माइग्रेंट इंडिया को अधिक आसले तो ए डिनोमिनेटर फैक्टर टा पढि जिवो ना टोटल पॉपुलेशन सो पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी कोन हे जिवो पीसीआरए ग्रेजुअली डिक्रीज करो ना रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमी गले अपॉर्चुनिटी कमीबो अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हे जिवो अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हे गले हमर कोन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कैपिटा इनकम कमीबो नेशनल इनकम कमीबो इसु प्रॉब्लम हमको देखा जाबो कोन रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमीले नाउ इला प्रथम प्रॉब्लम आउ कोन ना देयर विल बी class between locals and migrant so there will change in the demographic picture change हे जिवो demographic structure माने यदि हम देखिए त्रिपुरा होची एमती गोटे राज्य भारत रे जोटी माइग्रेंट मानकर नंबर अधिक as compared to original inhabitants of त्रिपुरा रे लोक मानक माइग्रेंट मानकर नंबर एटी अधिक बुझियो जी so class between local and migrant ये start हो it will lead to communal violence it will lead to bloodshed हमको देखियो मिलियो हैला डेमोग्राफिक चेंज हो देन कल्चरल चेंजेस हमको देखियो मिलियोबा तक हम कहि परिया कल्चरल पोल्यूशन एटी हमको देखियो कोन देखियो मिलियो कल्चरल पोल्यूशन देखियो मिलियो हैला देन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इशू इज सिक्योरिटी इशू कोन ना दे आर नॉट पैट्रियोटिक पीपल माने कर इंडिया को बांग्लादेश रो लोक आसले माइग्रेट करके so they are not emotionally attached to India they are coming India because of certain factors maybe because of religious persecution maybe because of poverty or maybe because of some other facts or जहां पर हम डिस्कस करियो को दिन सब पई एटी माने माइग्रेट करन पोस्टफुल माइग्रेशन कोन पई भी so they are not very much emotionally attached to India let's say they will be misused by mafia gangs they will be misused by LWE they will be misused by insurgent activists बा जो मान रहिले हमर कोन मिलिटेंट्स जो मान करथन जम्मू कश्मीर रे जो मान मिसयूज ही पर से मान को स्लीपर सेल हिसाब रे यूज कर दे पारे दे मे बी यूज्ड फॉर ड्रग्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग मे बी यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन सो सिक्योरिटी कंसर्न मध्ये रही छि एठी जेतोर से माने अधिक और अधिक तांका नंबर बढ़ी जाउछि दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला हमो पई कोन प्रॉब्लम नाउ जो माने रेफ्यूजी जो माने इंडिया को आसुचंती बा अलगा कोन से कंट्री को जाउछंती व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग problems like poverty illiteracy हैला then there human rights violation then how कोन फेस करछन से माने apart from human right violation ना abuse different type of abuse like mental abuse sexual abuse physical abuse face करछन कोन काम करा जाउची ता बदल रे पैसा दिया जाउनी forced for prostitution यूज करा जाउची ना so these are different points जोड़ा को डिस्कस करनी then there is a forced displacement also forced displacement कौन forceful displacement from one place to another place maybe because of armed conflict जोड़ा का हमको इजराइल पैलेस्टाइन एग्जांपल नहीं परिबा generalized violence ପାଇଁ ही पारे human rights abuse ପାଇଁ ही पारे natural disaster ପାଇଁ ही पारे जेम श्रीलंका crisis for India को असर लोग because of poverty पर like Bangladesh because of high incidence of poverty there is a pull factor which attracts Bangladeshi migrants to India Bangladeshi refugees to India
maybe because of religious persecution, like Rohingya Muslims persecuted in their own state, Myanmar, Rakhine state. So they were coming to India. These are the grounds. These are the grounds. How example देखो natural disaster 2015 रे नेपाल को इंडिया को आसिले religious persecution Tibetan refugee इंडिया को आसिले तो चाइना एको कैप्चर करियो लागिला का तिब्बत को so ସେମାନେ इंडिया को पड़े आसिले Tibetan refugee then Rohingya Muslims from Rakhine state of Myanmar political instability ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ये create पर refugee condition जेमते 1947 ने create ହେଲା इंडिया पाकिस्तान जेतो पार्टीशन नै गला सेते बेले मध्ये पॉलिटिकल दिस इज अ पॉलिटिकल कॉज जोदि पई दिस इज अ पॉलिटिकल कॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पई नेबरिंग कंट्रीज माने हला सो इंडिया जदि हम देखिबा गोटे इंटरनेशनल कन्वेंशन अछि जाना होछि रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन नाउ इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस जेतु इंडिया गोटे सिग्नेटरी नुहे आर डिफरेंट प्रोविजन गुडा को हम एक्सेप्ट करूनु आर प्रोविजन गुडा को हम इंप्लीमेंट करूनु हला आउ कोन पई कहूछि रेफ्यूजी माने आछन ना पॉवर्टी बांग्लादेश रो एग्जांपल आउ कोन पई ना पोरस बॉर्डर जेम देखिए इंडो नेपाल बॉर्डर पोरस इंडो भूटान बॉर्डर पोरस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कंप्लीटली पोरस no restriction nothing you can easily move throughout the border so people are moving from that country to India and refugees गुडा को एठी बॉडी बॉडी चलुछि हैला रेफ्यूजी मान ताल कोन प्रॉब्लम फेस करचंदी ना पॉवर्टी malnutrition hunger abuse physical mental sexual abuse lack of basic amenities like food shelter cloth healthcare facilities education ये सब किछि को एक्सेस नहीं so this is simply violation of their human rights हैला next topic को जीवा this is about refugee forceful migration कथा कहली environmental induced migration मन रखबे environment induced migration मध्ये अछि because of disaster पई गोटे जगह और जगह को माने मूवमेंट करथान now next topic को जीवा vision India 2047 so vision India 2047 this is the strategy by Niti Aayog आर ऑब्जेक्टिव कोन अच्छा एटा को टॉपिक रे आसुची समस्त जानि परचंदी मते कहिवार आवश्यकता नै बर्तन को टॉपिक आसुची बिकॉज़ लास्ट क्लास रे मो होमवर्क देथिली कि समस्त माइक्रो सिलेबस पढिबे मन की आसीबे जीएस 1 2 जानि छि बहुत जन कर नथिबे जो माने रेगुलर इवन प्रिपेयर करचंदी आ क्लास भी अटेंड करचंदी किन आज आउथर कहूची जीएस 1 2 3 4 रो सिलेबस को भलो भाबरे मन रखंतु बुझंतु ताको यूटिलाइज करो न बुझले सिलेबस मन रखले ना ई क्लास ता एतेटा इफेक्टिव होबन तो जानिया दरकार कोड आसुची एटा आसुची इकोनॉमिक्स विजन इंडिया 2047 इकोनॉमिक्स आसुची सो दिस इज द स्ट्रेटजी बाय नीति आयोग सब जीएस पेपर 3 कोन कहलेटी कोड आसुची कहि दोची जीएस पेपर कोन ना जीएस पेपर 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक प्लानिंग बा ग्रोथ डेवलपमेंट बा डेवलपमेंटल प्लानिंग कोइ परबा डेवलपमेंट सब टॉपिक हैला नीति आयोग सो ऑब्जेक्टिव एटी कोन कहली यार ऑब्जेक्टिव होची टू अचीव USD 30 ट्रिलियन इकोनॉमी विथ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ USD 18,000 to 20,000 US डॉलर 20 ରୁ 18 ରୁ 20,000 पर्यंत इनकम आउ कोन देखुची हम एठी ना पर 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 now what are the problems directly पासुची कि what are the challenges to achieve developed economic status हम एठी करते ना 2027 सुधा इंडिया वर्तमान गोटे डेवलपिंग करते इकोनॉमिक स्टेटस वाइज देखले लीस्ट डेवलप्ड बा अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया होची गोटे डेवलपिंग कंट्री हमें चाहूचे 2047 सुधा हमको डेवलप्ड कंट्री रो टैग डेवलप्ड कंट्री टैग then what are the challenges to achieve developed economic status pratham hala poverty and inequality kon कहल the first is poverty and inequality as we are suffering from poverty is a vicious cycle we will be not able to come out from poverty hame poverty ru bahar को आस परिबे kon कहली we cannot come out from poverty ru kahi ki bahar को आस परने not a vicious cycle person suffering from poverty remains there forever until and unless external forces applied until and unless government interferes or any third party interferes and takes out of that person from poverty so vicious cycle भीतर रहि जाउछ हैला तो poverty eradication related scheme को हमको implement करिया पई पड़िबो inequality को reduce करिया पई पड़िबो इकोनॉमिक्स क्लास रे पढिला बेले inequality ऊपर डिस्कशन करिछि इन गिनी कोएफिशिएंट आई डिस्कस 90% of resource
is with 10% people and 10% of resource that is with 90% of people. So it shows level of extent of inequality in India. It shows extent of inequality in India. ये ताले कौन कहला? ये कहूँ about poverty and inequality. कौन कहूँ? It talks about poverty and inequality. Then कौन कहली? ना middle income trap. Middle income trap. Middle income trap रे problem कौन हुए जानी जो? जो मानकर मीडियम इनकम थाए जोड़ा का मीडियम इनकम ग्रुप रह गले से माने ता भीतर बाहर बस करन दे आर under a lot of pressure, under a lot of responsibilities they have to shoulder on ହେଲା तो देखिए अनेक गुडे ईएमआई सबले मिडिल क्लास करियो लोअर क्लास करिबनी कि अपर क्लास करियो सो देयर इज अ मिडिल क्लास ट्रैप तारे भीतर ही से रहि जाउ चाउ ऊपर कुटी कर लाइक अ पॉवर्टी ये पॉवर्टी रे नहीं बट देयर इज अ मिडिल इनकम ट्रैप जे ता ऊपर को जाई कोन अधिक इनकम करि पर then demographic dividend it is most important point please remember this mark this point this is demographic dividend aging population increase होची इंडिया रे कोन हो जानछन aging population increase होची जोटा 21 मसिया पाखापाखी को एजिंग पॉपुलेशन इंडिया रे बढ़ियो लाइक चाइनीज कंडीशन है बर्तमान हम इंडिया को हिंदुस्तान को यंगिस्तान कहते बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ यंग पीपल पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन हम पाखे अधिक अछि बट बर्तमान वी आर अडॉप्टिंग न्यूक्लियर फैमिली अडॉप्ट करछंती धीरे धीरे कोन हो जानिछन भविष्य को धीरे धीरे हम पाखे ओल्ड एज पॉपुलेशन अधिक होई जिवे चिल्ड्रन अधिक होई जिवे मीडियम एज पॉपुलेशन जो माने यंग पॉपुलेशन ना सेटा डिक्रीज हो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज होची इंडिया रे एज स्ट्रक्चर इंडिया रे कोन होची कहली ना एज स्ट्रक्चर ता बदलिबा को जाउची एजिंग पॉपुलेशन ता एठी चेंज होबा को जाउची सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देयर इज लैक ऑफ स्किल कोन कहली एठी लैक ऑफ स्किल जब स्किल नाही तले गोटे लोक काम केमति करियो इकोनॉमिक एक्टिविटी केमति करियो और एडिशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी केमति हो एडिशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी केमति हो परियो देन आउ कोन दरकार नाउ वी नीड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर कोन दरकार now we need we are having stagnant agriculture sector growth karun we are stock in between MSP FRP then your MIS are bhitar ame rahi jai agriculture sector sina growth kale in the global economy we have lot of opportunities for agro products let's produce more let's sell more in the international market let's earn more forex let's be rich why to be there always in the below the poverty line so lack of stagnant agriculture sector हवा कारणरू agriculture sector stagnant हवा कारणरू problem कोन agriculture रे maximum workforce they are engaged workforce total workforce रो maximum percentage there and minimum contribution of agriculture sector to GDP को कम contribution यार workforce अधिक so agriculture sector develop होने there are different problems we have to use different type of technologies in agriculture like mechanical technology different mechanical machines cultivator tractor harvester पानी पंप ये सब यूज करि परिबा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करि के हमें डाटा कलेक्ट करि परिबा अबाउट इंफॉर्मेशन नहीं परिबा को मार्केट रे केते प्राइस केमिकल टेक्नोलॉजी यूज करि परिबा इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स देन वीडिसाइड्स ऑर्गेनिक केमिकल्स वी कैन यूज देन वी कैन यूज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बाय बायोटेक्नोलॉजी so different type of technology को हमें यूज करके एग्रीकल्चर को डेवलप करि परिबा बट एज ऑफ नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड सेक्टर इन इंडिया though India is an agricultural country Indian economy is mostly based on agricultural activities still we don't have a very developed form of agricultural practice so it is a stagnant one in the same way underdeveloped manufacturing sector ta madhya India underdeveloped ye bhi ete develop tale ko sector ame strong to some extent last 20 वर्ष रे हमको देखियो कोनची in IT and ITS sector we are doing well service sector रे we are doing well जेते बेले structural transformation हुए हम कहितली कि प्राइमरी सेक्टर रू कोटी मूवमेंट करन ना सेकेंडरी कैन टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रो कोटी मूवमेंट करन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को ताको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहूजे एटी देखिला हमें कोन सेकेंडरी को मैक्सिमम मूवमेंट न होय कि डायरेक्ट टर्शियरी को अधिक हो जाय छी सो सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी हमको अधिक देखिया को मिलछि सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी हमको अधिक देखिया को मिलछि प्राइमरी और सेकेंडरी रो इंपोर्टेंस कमी जाय छी नाउ ए दुटा सेक्टर को हमको डेवलप करिया पड़ियो कारण प्राइमरी की और सेकेंडरी फूड सिक्योरिटी बढ़िया को पड़ियो फूड प्रोडक्शन बढ़िया को पड़ियो अधिक होउची तो ग्लोबल मार्केट को नियो WTO रिजाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अछि डिफरेंट कन्वेंशंस एग्रीमेंट्स FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स आर देयर सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर देयर विथ मेनी कंट्रीज सो मोस्ट फेवर्ड नेशन बहुत बड़े कंट्री हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन ना मान्यता दैछंती सो लेट्स हैव बिजनेस विथ देम लेट्स हैव इंटरनेशनल बिजनेस विथ देम सो दैट वी कैन हैव मोर फॉरेक्स अधिक हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एटी मध्ये इनकम करि परिबा वी कैन डबल द फार्मर्स इनकम फार्मर सुसाइड करूची फार्मर इनकम करि परने सुसाइड करूची अदर कंट्री ने खाइबा मिलुनी फूड इनसिक्योरिटी इज देयर now let's
use this opportunity. Let's empower our farmer by doubling the farmer's income. How? How to double the farmer's income? Now, to double the farmer's income, we have to increase the production. Now, production increase kariya pai hele awareness badhiya pai padibo. Political stability required, strong political interference required. ये सब हेले ही एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर पाए. ଆଉ ଏମିତି ଆମେ farm law type ର law ଆଣୁଥିବା, law repeal କରୁଥିବା, farmer ଯାଇକି strike କରୁଥିବ. So nothing is added to the economy. We have to, irrespective of party politics and all those, we have to think about our common people. We have to think about the poorest of the poor. Whatever we are doing, whether it is going to be helpful for them, whether it is going to be helpful for the farmer community. ଏଇଥି ପାଇଁ ତ ନାରା ଉଠିଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ. କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ. କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଜୟ କିଷାନ? Because the person who feeds the entire country lives in starvation. The person who works for throughout the day, throughout the year, in all the seasons, ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ କାମ କରୁଛି, and the person is living in starvation. The person is committing suicide. The person is suffering from poverty, malnutrition, hunger, trap, loan trap. या भीतर रही जाउछ, and finally he is compelled to commit suicide. Suicide करी farmer मरी जाउछ. So add to pathetic story or what might be the most darkest part of a democratic country. One part we are trying to be Vishwaguru, we are trying to be Jagat Guru, no problem. In another part we are having international or global market to access, having different bilateral, multilateral treaties, different conventions we are signing, increasing India's participation. Now India is shouldering responsibility of the world. What about our own people? What about our own farmers? Doubling farmer income aji portanta people. The most vulnerable community. The most vulnerable community in world, the farmer community. Irrespective of going for vertical reservation, horizontal reservation, go for reservation for farmers. We're talking about reservation in terms of religion, in terms of your gender, in terms of caste, in terms of minorities, there is the reservation. Article 1516, Article 1516 of the Indian Constitution, they talk about different types of reservation, but no policy, no reservation policy for the farmers, the most vulnerable community. जे सारा देश ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି and finally committing suicide. And we are only talking about DFI, doubling farmers income in pen and paper. No practical work, nothing else. Actual development farmer कौन कले ही परिवो. जदि तार production बढ़िवो तेबे ही परिवो. Production केमती बढ़िवो? Production केमती increase हो? That was sustainable production होगा दरकार. But there are different aspects like land reform दरकार, technological intervention दरकार, farmer को credit facility दरकार, farmer awareness create होगा दरकार. ये सब बढ़े तो automatically farmer रो income बढ़िवो, production बढ़िवो तो income बढ़िवो. Most important होची farmer production कला पर market रे से ठीक रेट रे बिक्री हो. मार्केट रे से ठीक रेट रे बिक्री हो. याडे हमें कोच वे टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक, सब प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी गला. सेड फार्मर को पैसा मिलन तार इनकम होनी एते जनरेट कला पर प्रोडक्शन. देन व्हाट इज, वेयर इज द लैक? हमें लैक कोठी करू छे एक्जेक्टली. मार्केट रे प्राइस अधिक डिफरेंट प्रोडक्ट रो जे प्रोड्यूस करछि ता पाखरे पैसा नै, तल पैसा के नउछ? समस्त आंसर दे मिडिल मैन सा नै जाउछ. मिडिल मैन से पैसा नउनी. देयर इज अ फिक्स्ड कमीशन फॉर द कमीशन एजेंट. देयर आर डिफरेंट loopholes or different जगह रे ये लैग करूछ जहां पर हम डिस्कस करिए. There is underdeveloped manufacturing sector, secondary sector ता underdeveloped. Secondary sector, the manufacturing sector underdeveloped रही गले, capital formation नहीं परिबोनी, employment facility मिलबोनी, बा capital asset मध्ये create नहीं परिबोनी. सेति पाई ए sector को हमको develop करिया पाई पड़े. We need a developed secondary or manufacturing sector. Then internal disturbance, ये बहुत important. Internal disturbance जितना बढ़िबो, economic activity सेते कमिबो. Take the example of Israel and Palestine. Take the example of Afghanistan, Taliban issues. Then insurgent activity in northeastern states, militancy in Jammu Kashmir, LWE in the red corridor. So ये गुड़ा disturbed zone, जो कि economic activity गुड़ा को बहुत कम है. Very less economic activities. Russia-Ukraine war. So economic activity obviously कम ही जीवो. So internal disturbance कम ही आता है. Then only we can have strong economic development. So India internal disturbance kono in terms of communal riots, communal violence, northeastern state insurgency, LWE in red corridor, Jammu Kashmir militants, and white collar crimes they also exist.
So एगुडा कले इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको रिड्यूस करिवार अछि. देन जॉबलेस ग्रोथ मोस्ट इंपोर्टेंट. वी आर हैविंग अ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ होची बट जॉबलेस, जॉब क्रिएट. जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पर पूरा डिस्कशन इकोनॉमिक्स पढ़ेला बेले करिछु. व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉब क्रिएट होनी इकोनॉमी रे ताले खाली ग्रोथ होच कोन ओनली प्रोडक्शन, नो जॉब क्रिएशन. जॉब क्रिएशन हेले सिना डिमांड बढ़िबो, डिमांड सप्लाई टा मैनेज हबो. देन इज पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब पोर, ये सब डेवलप करो. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न कले इंडस्ट्री बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करि परिबो. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न कले इंडस्ट्री बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैन नॉट डेवलप. सो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको डेवलप करिया पे पड़िबो. So these are the challenges to achieve developed economy. The question it asuchi ki hindrances, discuss hindrances to Vision India 2047, or what are the challenges to have the tag of developed economy or to reach at USD 30 billion economy. Then ए point गुडा को समस्त discuss करिए. हैला. Next point to jiba the issue of institutional violence Indian society. Topic कौन कहली? Indian society रे होगी topic. बा सोशल जस्टिस रो मध्ये ये टॉपिक ये दीटा ना बहुत समय रे लैप्स करियो सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी. दिस इज फॉर द वल्नरेबल सेक्शन. फॉर द वल्नरेबल सेक्शन अगेन गवर्नेंस भी आप नहीं पढ़िए वल्नरेबल सेक्शन. नो वायलेंस ड्रामेटिक कोन देखु छी. रिसेंटली मु गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट रो आरंभ करछि को इलेक्शन हला. जनरल इलेक्शन इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव देयर ओन एजेंडा. इलेक्शन एजेंडा समस्त आनिले ना कि कहला मु बिजुली फ्री देबी के पानी फ्री देबी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर. Now, no one focused on gender discrimination. No one focused on women empowerment. यदि हम Indian voter देखिए 642 million voters, mostly women. But there is less concern over women's safety, less concern over gender-based violence. Certain crimes can be instituted, committed only against a certain gender. Gender-based violence. But a global policy think tank अछि जार नाम अछि JPAL. कौन कहली जाना होची जेपल. ये गोटे रिपोर्ट आनिला 2019 में. ये कहूची कि पुलिस ऑफिसर माने भाबुचंती कि जेंडर बेस्ड वायलेंस गुडा का बेसलेस. जेंडर बेस्ड केस जहां फाइल होची एफआईआर दिया होची सब एफआईआर होची बेसलेस एफआईआर. तार किछि वैल्यू नाही. ऑल आर वैल्यूलेस. काहे कि then what is the problem? The most important problem here is access to justice. Access to justice रो अर्थ होची जो माने अनएम्पावर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो माने अनएम्पावर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, they don't have access to justice. सेमान को justice मिली पारनी. Unemployment केमते decide करना? It is not decided on basis of economic calibrity or maybe on the basis of caste. Rather, those who are having less knowledge about the economic system, those who are having less knowledge about the economic system, तांको में कौन पूछे ना they don't have access to justice. So access to justice increase करिया पे पड़ियो. They should know about their rights. They should have awareness. There should be someone to support them. उनके support करिया दरकार. Justice न मिलला तक justice provide करिया दरकार. Providing justice at their doorstep. Providing justice at their doorstep ये सब मिलला दरकार. Now on the basis of gender, women is the most vulnerable section. So they are facing different type of discrimination. यदि हम देखिबा the entire life cycle of a woman that is controlled by a man. तो छोटो अछि infant stage, children stage controlled by father. बड़ा हो गला controlled by father or brother. बाहा हो गला after marriage controlled by husband. Old age हो गला controlled by the son. Now the entire life cycle of a woman is controlled by a man. So this is the nature of the extent of patriarchal society that we are living in. खाली example हमें कौन देखिले? ये example हमें देखिले. The entire life cycle of a woman is controlled by a man. It shows the extent of empowerment. Now the question of empowerment or question of access to justice, this is the cause of concern. This is the cause of concern which needs attraction of the government, which needs attraction of the policymakers, social activists, gender-based activists. Now problem कौन है जो activism होती है तासे तो पुनी आउरी अलगा problem है. Activism कौन हो? बुझे को चेष्टा करंतु. Women empowerment is not about exactly going against men. What are the activities done by men? ता against जिबाटा को women empowerment कहते हैं. जी जोटी अछि ताको ऊपर को नवा को women empowerment कहते हैं. Anyway मु ता पर आउ के डिस्कशन करबी तो ए टॉपिक आछो. So confining to this topic, institutional violence बढ़ुची कोन पई? Gender based discrimination अधिक, female infanticide, female ferticide हमको अधिक देखिया पई मिलुची इंडिया. Even if economically prosperous states like Punjab, Haryana रे मध्ये हमको अधिक देखा मिलुची. Why? Now we consider birth of a baby girl, that is always economic burden on the family. Widowhood of a woman, widowhood of a female, that is inauspicious for the family. So in general we connect
the prestige social status of a family with the social status of the women of that family. बुझे कि नहीं? So there is gender based discrimination which exists in India. Then lack of participation and awareness. Lack of participation, once participation increases, that will lead to empowerment. बुझेला? सेतेबेले ही empowerment अब otherwise empowerment ही परिबन. We have to increase participation, we have to increase awareness. Then is corruption. Corruption बढ़िया कारण different type of scheme को हमें implement करी पाए. Different type of scheme को हमें implement करी पाए. So it increases institutional violence. मुझे ये टॉपिक केमते कंटिन्यू हबो ये जो 9th टॉपिक ऑन इंस्टीट्यूशनल वायलेंस एंड हाउ टू एड्रेस इट वुमेन एम्पावरमेंट हैला ये बारंबार आथि हमें किछि क्लास पला पर ना 2-3 मास देखिबे सेम टॉपिक सेम पॉइंट हमें पुन रिपीट करिया सो दैट यू कैन यूज दैट एज रिवीजन एवं मने भी रहि जिवो एवं आंसर भी लिखि पारि बहुत गुडे टॉपिक एटी कोलैबोरेट करि आ नुवा नुवा पॉइंट ऐड ही चलिबो सेम टॉपिक रे नुवा पॉइंट ऐड ही चलिबो सो एटी हमें नॉट अ इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर आज डिस्कशन कले लास्ट 2 week रो एडिटोरियल जहा जहा इंपोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर रिलेवेंट टू द ओपीएससी एग्जाम सेति के डिस्कस करछि अदरवाइज टॉपिक तो बहुत आसुछि मु कहि जे आरंभ कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज इंपोर्टेंट तेणु डिवाइड कर देबे कोन पढिबे कोन न पढिबे आज जहा पढिली ताको पढिबे बुझिबे तार नोट्स करिवे समस्त जहा डिस्कस करले सबुरो नोट्स करिवे ताको डाउनलोड करके रखिबे डाउनलोड कर रखिबे नोट्स करके रखिबे एंड रिवाइज दैट नोट्स देन व्हाट इज द होमवर्क देली फर्स्ट होमवर्क कहितली माइक्रो सिलेबस मन रखिबे माइक्रो सिलेबस मन रखला परे माइक्रो सिलेबस मन रखला परे आउ कोन करिवे ना या ऊपर जो जो पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करले से पॉइंट गुडा को ऊपर किछि क्वेश्चन आंसर लिखिया पे चेष्टा करिवे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखिया पे चेष्टा करिवे हला दे दोछि किछि क्वेश्चन सेम टॉपिक ऊपर social justice restoration of social justice restoration of social justice of mentally ill people is need of the hour discussed एटारे सोशल जस्टिस एंगल को डिस्कस करिवे कोन करिवे एटी सोशल जस्टिस एंगल को ये क्वेश्चन डिस्कस करिवे सेम क्वेश्चन ने जने हम लिखिबा mental illness is an economic burden elaborate आपको लिखिए कि मेंटल इलनेस केमती गोटे इकोनॉमिक बर्डन हला केमती ना पर कैपिटा इनकम होनी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी होनी ए सब डिस्कस हो सेम पॉइंट रे दीटा एंगल देली इकोनॉमिक्स एंगल और सोशल जस्टिस एंगल रेफ्यूजी राइट्स लिखिए हु आर refugees discuss causes and solutions to forced migration प्लास्टिक पॉल्यूशन ऊपर किछ दोनी एटा को यूज करिवे डिफरेंट जगह रे डिफरेंट ईयर यूज करिवे देन वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड गोटे दोछि वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर गोटे दोछि discuss effective methods to carve down violence against women स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड भी लिखि पारे बट एति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेखन देखिबा धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा एटी जो जो पॉइंट देली जो जो क्वेश्चन देली एति क्वेश्चन लेखन तापर आगे देखिबा
ग्रेजुअली बढ़िया तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आम कौन कौन ताल डिस्कस कले आज क्लास डिस्कस अबाउट मेंटल इलनेस देन आउ को पॉइंट ऊपर डिस्कस कले प्लास्टिक पोल्यूशन आउ कौन देखले ना इंटरनेशनल कोऑपरेशन of different countries pandemic time period रे and refugee related concept ऊपर मध्य discussion कले then women empowerment ए important point गुडा को हम आज डिस्कस कले in the same way आगो को मध्य हम डिस्कशन करिवा जहां हम कहि जेमति कहि प्रिपेयर होआ पई जो वे कहली आपको यूटिलाइज करिया पई एडिटोरियल एनालिसिस को समस्त यूटिलाइज करिवे मोर एक्सपेक्टेशन कि हमें जहां डिस्कस करछे से सब बेस्ट फायदा प्रत्येक एस्पिरेंट के so let's wrap up this class. Let's find out. See you in the next class. Thank you very much.